यूक्रेन रे रशिया आक्रमण पर यूक्रेन सहायता मागिला भारत को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सहायता मागी जेहेतु रूस सहित भारत रो संपर्क भल, तेबे भारत एही मामला रे हस्तक्षेप करने को वर्तमान समय यूक्रेन राष्ट्रपति सहायता मागिछंती। युद्ध भितर भारत को यूक्रेन मागिछि सहायता। भारत में यूक्रेन राष्ट्रदूतों को से अनुरोध करिछंती एवं रूस राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मोदी आलोचना पाई मध्य अनुरोध करिछंती। यूक्रेन रूस विवाद रे भारत सक्रिय भूमिका ग्रहण करने को मध्य से अनुरोध करिछंती। तेबे कूटनीति माध्यम रे समाधान पाई अपील करिछि भारत। शांतिपूर्ण भावे आलोचना करी समस्यार समाधान हेउ कहिछि भारत। तेबे युद्ध भितर भारत को सहायता मागिला यूक्रेन, किंतु एसबु भितर जेतेबेले अनेक समय आम देखुछे भारत रशिया मध्य गोटे संपर्क भल रही, तेबे हुए तो यह पाथेय करी यूक्रेन चाहूँगी भारत यह मामला रे हस्तक्षेप करू एवं रशिया राष्ट्रपति सहित कथा हुई शांतिपूर्ण भावे यही युद्धर केमिति गोटे समाधान बाहर ता वर्तमान समय यूक्रेन चाहूँगी। किंतु यूक्रेन रूस विवाद रे भारत जारी कला गोटे हेल्पलाइन नंबर। यूक्रेन रे थिबा भारतीय छात्रों पई एही हेल्पलाइन नंबर जारी करा जायछि। हेल्पलाइन नंबर 1800118797 जो नंबर टी जारी करछि भारत। वर्तमान समय भारत रो पाखापाखि 20,000 लोक फसी रहिचंती यूक्रेन रे। हुए तो परिवार लोक मध्य व्यस्त होउथिबे एवं सेमाने एभली परिस्थिति रे फसी रहिचंती यूक्रेन रे। तबे सेमानकर खबर पाई वर्तमान समय भारत पक्षर गोटे हेल्पलाइन नंबर जारी करा जायछि, जोटी दुईटी नंबर दिया जायछि। तबे एही दुईटी नंबर द्वारा जोगाजोग करी भारतीय माने सेमानकर पुओ किंबा झियो बा कोनोसी संपर्कीय जदि यूक्रेन रे रहउचंती तेबे सेमानक खबर मध्य पचारि बुझी पारिबे एवं जोगाजोग करबा पय मध्य चेष्टा करिवे। तेबे हेल्पलाइन नंबर वर्तमान समय भारत जारी करिछि यूक्रेन रे फसी रहितबा भारतीयंक पई। एहा होछि वर्तमान समय आउ गोटिए बड़ खबर। किंतु एसबु भितरे जेतेबेले युद्ध आरंभ होई सारिछि एवं ता मध्य रे यूक्रेन भारत रो सहायता लोडिछि। एमिति कि यूक्रेन रो राष्ट्रदूत नरेंद्र मोदी हस्तक्षेप पई मध्य अनुरोध करिछि। यह मध्य कहा जायछि जे भारत एवं रूस मध्य गोटे सुसंपर्क रही, तेबे भारत चाहिए रूस सहित आलोचना करी ए युद्धर गोटे समाधान बाट बाहर कर परिबो। केवल एतिकी नुहे, रूस एभली आक्रमण घटना को विरोध करी नाटो देश गुड़िक मध्य एकत्रित होउछंती रूस को एहार जवाब देबा पई। तेबे यूक्रेन एवं रूस मध्य विवाद भितर सेठारे फसी रहितिबा लोकों पई भारत पक्षरु एडवाइजरी मध्य जारी करा जायछि। एहा मध्य कहा जायछि वर्तमान स्थिति खराब रहिछि, जी जेउठी अछंती सेठी रहितांतु बोली भारत पक्षरु ए एडवाइजरी रे कहा जायछि। जो लोक घरे रही से घरे रुहतु सुरक्षित भाव एवं जो भारतीय छात्र छात्री माने हॉस्टेल रे रहउचंती सेमाने हॉस्टेल रे रहिबा पई मध्य भारत पक्षरु कहा जायछि। तो वर्तमान समय आपण कंट्रोल रूम रो चित्र देखि पारुछंती। तबे जोठी वर्तमान समय स्थिति उपरे पूरा नजर रखा जायछि एवं एपटे भारत को सहायता मागुची यूक्रेन। सेपटे भारत पक्षर गोटे एडवाइजरी जारी करा जाउची जे जो भारतीय माने रहिचंती विशेषकर जो छात्र छात्री माने रहिचंती सेमाने जी जोठी अछंती से स्थान रे रहिबा पई मध्य भारत पक्षर अपील करा जायछि। दुईटी एडवाइजरी नंबर मध्य जारी करा जायछि। तेबे एसबु भितर पूरा स्थिति उपरे नजर रखा जायछि, किंतु यूक्रेन चाहुनी आहुरी स्थिति बिगुडू बोली। यूक्रेन चाहूची जे भारत एही मामला रे वर्तमान समय हस्तक्षेप करू एवं रूस राष्ट्रपति सहित आलोचना करी ए युद्ध को बंद करू। किंतु अमेरिका एहार गोटे जवाब दिया जिवो बोली अमेरिका राष्ट्रपति पक्षर कहा जायछि, जो भली भाबे अन्यायचित भाबे आक्रमण करा गला। Of defense was very cynical. We are attacking only military sites and military installations, but we have faced civilian casualties even on the outskirts of the capital.
There is fighting in some areas. According to the information of our Ministry of Defense, Ukrainian side shot down 5 Russian fighter planes, 2 helicopters. We destroyed 2 tanks and several trucks. Information is continuing to come. In spite of these assurances of the military, of the strikes on the military sites, there are reports that Russian troops are crossing the border. I have special case. The relatives of my wife live just 15 kilometers from the Russian border. Early in the morning, they were waken up by some explosions on the territory of Ukraine. In the border area, Russia attacked a lot of Ukrainian checkposts and border posts. Ukraine already is introducing the military state. We are starting mobilization of the reservists. Ukrainian army is not the army of 2014, when it was very much feeble, disorganized. After 8 years, situation drastically and cardinally changed. Ukrainian people are not panicking. We are ready to defend our territory, territorial integrity, to defend our towns and cities. And this information on the first casualties among invading troops is confirmation of this fact. This aggression, it was not predicted by anyone. Sober-minded people could not expect it. Up to the last moment, the world was hoping for the peaceful solution. Up to the last moment, our president was repeatedly asking for bilateral negotiations with Russia. No response. Now we can see the clash of democratic country. Ukraine is like India, democratic country, and totalitarian regime. Now I am ambassador to India. Of course, the position and the task of every ambassador is to make the position of the country of his state more favorable to our case. The special case is India. You know that India is United Nations Security Council non-permanent member. India is very influential global player. I am dealing with India from my young student years, and I know a lot about the history of your diplomacy. You had such bright guys like Kanak, or otherwise he is called Kautilya, approximately 2,400 years back, when on the major part of Europe there was no civilization, and even those days you had qualified diplomacy. Let's go into your mythological stories.
Just remember Mahabharata, which, according to some reports, the war happened in 3102nd year before Christ. Even before Mahabharata war, there were active attempts of solving this conflict by peaceful means. Unfortunately, in Mahabharata case, it was not so successful, but I am hoping that in our case, it should be much more successful. Don't forget that India, for many years, was and still the leader of non-alignment movement. Non-alignment movement was created in the time of the Cold War just to prevent wealth tensions. It was based on the principles of peace. Don't forget that India was among architects of the world famous 5 principles, Panchashila. That's why at the present moment we are asking, pleading the support of India. India is the powerful global player, and in case of aggression of totalitarian regime against democratic state, India should fully assume its global role. Modi ji is one of the most powerful and respected leaders of the world. You know that you have special, privileged, strategic partnership with Russia. I don't know how many world leaders Putin may listen to, but the status of Modi ji makes me hopeful that in case of his strong voice, Putin at least should think over. We are expecting for much more favorable attitude of the Indian government in this crisis situation. It's the moment of truth, moment of destiny. I am following all the reports on the site of your ministry, and the latest advisory to your citizens in Ukraine was just not to go out, not to go to Kiev, and recommendations and the statement of your Ministry of External Affairs was that India is closely following development of events. We are deeply dissatisfied with this position. What does it mean, closely following or more closely? Now 10-15 people are killed. When hundreds or thousands will be killed, in this case, what will happen? Is following more closely. We are waiting, we are asking, we are pleading for the strong voice of India. In this case, I think that in this case, your Prime Minister can address Mr. Putin, he can address our President. Many times in the history, India played peacekeeping role. You are among the first nations from the point of view of amount of peacekeepers, even of military casualties during peacekeeping operations. That's why peace-loving nation of India, we are asking for your strong voice to stop
this war. I don't know what will happen in 1 hour, in 2 hours, after 1 day. Situation may get out of control. And in this case, it will not be, as some people are claiming, regional conflict. It will be the conflict involving the whole world. Already, approximately 70 countries, geographically starting from Guatemala and ending with Japan, already supported of Ukraine, expressed their support of Ukraine. We are most hopeful that the amount ते भारत रे यूक्रेन रो राष्ट्रदूत आइगोर पोलिखा एक प्रेसमिट करिसेंती। प्रेसमिट रे सीधा सड़क से भारत रो हस्तक्षेप लोड़ुछंती, अर्थात प्रधानमंत्री पाखरे से निवेदन करुछंती जे एही मामला रे से हस्तक्षेप करंतु एवं समाधान बाट बाहर करंतु। एहा मध्ये से कहउछंती जे भारत रो रूस सहित संपर्क भल, तेबे भारत प्रधानमंत्री चाहिले हुए तो यार समाधान होई परिबो। स्थिति को नियंत्रण को आनिबा पई भारत एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका मध्य ग्रहण करि परिबो बोली आइगोर पोलिखा ये प्रेसमिट्रे कहते। तेज मोदी हस्तक्षेप से वर्तमान समय दाबी कर से कहते सीमावर्ती अंचल में सकाळे विस्फोरण होता, राजधानी कीव्र आखपाख अंचल विस्फोरण होता। एमतीक 5 रूसीय लड़ई विमान को मारी तल को खसाई दि जाइए, किंतु एसबू भितर यह घटना वर्तमान समय केमिति समाधान हो पार, ए युद्ध को केमिति रोका जाई पारिबो, एथिपाई से भारत सरकार को पाखरे निवेदन करिसेंती।